Walaikum Assalam, sir. Ji, my dear students, if you have any question or if you want to ask anything as far as the concern of the last lecture, you can ask me, or we can start straight away with our chapter number one. Last time I've told you that we will be doing practical and theory side by side. So what I am doing, I am starting practical today, theory today, and then we will do the practicals on Monday and the theory on Tuesday. So it will be pretty helpful for us to complete both things side by side. I have shared my screen. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Sure. That's great. Okay. So no question. Should I start with something new? Okay. I think no question. So the chapter number one is about data, information, and knowledge. So the chapter number one is about data, information, and knowledge, and few of these words, like there are three words: data, information, and knowledge. Two of them are widely used. Whenever we talk about the computers, the word number one is always up there. Uh, what do you think? What is data? Any one of you, if you can tell me in your own words, what is data? Data is any information regarding a certain thing. For example, data about books, information about books. Data is the technical term of the computer. Okay, so you are saying data is any type of information. It means information is any type of data. Obviously, it sounds like that. Yes, your example is quite relevant. Not exactly, but quite relevant. Ramin, do you want to try? Data is information. If data is the information, why do I need to write the information apart from data? Why do I need it? Strange, I have two different words, and when I talk about these two different words, it means they both are different things. So now I start with it. Data. Data means, if I talk about the book-based definition, and then we will talk about different examples and all that to understand this term. Uh, Data, as far as the book concerned, is collection of facts and figures. Especially if I add one thing in it, collection of raw facts and figures. This is very important. Whenever we talk about the data, data means collection of raw facts and figures. Now, what is meant by the raw? Raw means any unprocessed thing, anything which is not processed yet. कोई ऐसी चीज जिस पे अभी काम होना है. So that should be called as data.
Whenever we talk about the data, it means any part of any information. Like what we can say, 22. 22 is what? We know 22 is a number. And if we want to dig deep, what we can say, it's an integer number. But why are we using 22 here? What is the purpose behind using 22? We don't know about it. This is what data is. If I give you another example, if I write Lahore, Lahore is a complete example. Lahore is a complete word. It's a complete information. But why I am using Lahore here on my screen? Whenever we write Lahore, we have a picture in our minds, the food, the culture, the places, वगैरह वगैरह. But we don't know why we are using Lahore. We can't create any relevance. We can't define that why we need 22 and Lahore together if I am using them together. So I need a complete information. So what is meant by the information? When we talk about information, information means information. Now, when we talk about the information, information means processed form of data. So data itself is a raw facts and figures which can't make any sense. Individually, they might make any sense, but we didn't get any usage. Any We can't get any usage of 22. हमें नहीं पता लगता 22 क्या चीज़ है. Why it's written here, उसको हमने क्या करना है. But if it is written in a complete sentence, like Lahore right now, क्या है Lahore? Lahore is what? Why? Lahore, कोई आ रहा है, someone is coming or someone is going or we are going out for in Lahore or something something. हमें नहीं पता इस बात का. अगर हम इसको process कर देंगे, if it is in the process form, uh, then it can give us some sense. Information mean process or process form of data which can develop proper sense. So ये हमारे पास जो है, this is how it is. So process form of data which can develop proper sense. Like I have an example Lahore up there, and if I talk about 22 down there, तो मैं क्या करूँगा? Information की what example we can give? We can give information example is like now it's a complete information. It makes sense. अगर मैं इसमें से कोई एक सिंगल वर्ड उठा लेता हूँ, that again turns into a data. So data means incomplete or raw facts and figures, though those raw facts and figures are important in themselves. Zahir hai, matlab these are the facts and figures, and these are the values, these are the words which makes the actual sentence. But right now they are not making any sense. So this is what is data and information. I give you a minute to write this. इसको जल्दी से लिख लें और फिर जो है we can move further. मुझे बता भी दीजिएगा. Let me know कि if you have write this क्योंकि I have to change the screen.
Done? Yes, sir. It's on. सर 1 सेकेंड. Okay, सर no problem. एक वो दूसरा बच्चा ज्वाइन कर रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ 1 मिनट. उसको लिंक दे रखे, उसको ग्रुप में भी नहीं डाला हुआ था. आ गया. Okay, the दूसरा बच्चा is Amin probably. यस सर. लिख लें इसे, then we should move further. So we just started the theory part, and the topic number one, the check number one is about data, information, and knowledge, and we have we are actually talking about data and information. And now we have to talk about knowledge. So what I'm doing, I'm just moving a screen little like this. So if anything left, you can write it. I hope data is already written. So now the third thing is knowledge. What do you think? What is knowledge? In your own words, again, in lights of data and information, we have started with data. Then we said if the data is in a form which makes sense, which creates sense, which is understandable to the people, to the public, that would be called as information. Now, what is knowledge? It's pretty simple. So it's a day-to-day term. Uh, Amin, do you want to try? So I actually have no idea what's going on here. It's my first time in this class. Okay. Okay, please turn off your mic. Okay, sir. Thank you. So that would be our regular practice कि हम mic कर दिया करेंगे जब तो करेंगे बात खत्म करेंगे. अच्छा, so what is mean by knowledge? Knowledge is something we acquire by our experience. Let's say make example that if we are driving on a ring road or we are driving on a motorway, rather we are driving on the motorway, तो what is the speed limit? कोई बताएगा क्या वो speed limit क्या है वहाँ जो वो boards लगे होते हैं? 80 नहीं है. I'm talking about motorway. ये जो हमारे बाहर रोड है ना, इस पे लोग 80 पे चलाते हैं. So when we talk about the motorway, the speed limit is 120 kilometer per hour. So this is the speed limit, right? Now, this 120 kilometer per hour is actually an information, right? What I was saying कि अगर तो ये खाली 120 होता मुझे नहीं पता होता क्या चीज. But if they are saying 120 kilometers per hour, can you please switch off your mic? Thank you. So अगर उन्होंने अब यहाँ ये लिख दिया है, if they have boards like speed limit, देखा होगा वो स्पेसिफिक तरीके से लिखा होता है राउंड रेड कलर में. So speed limit 120 किलोमीटर पर आवर. This is information. Right now, this is my complete information. It makes sense. It gives me complete information. कोई incomplete चीज नहीं. अगर 120 खाली लिखा होता, that makes me confused कि 120 is पता नहीं. और अगर 120 किलोमीटर पर आवर से नीचे ये और भी लिख दें तो ये और कंप्लीट
कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है कि फॉर हैवी ट्रैफिक या फॉर लो वे ट्रैफिक, यानी किस ट्रैफिक के लिए जो है यू हैव अ स्पीड लिमिट और स्पीड बैरियर. बट very interesting thing. If you are driving on one day, what happens? कि I was driving on a motorway and वो एक पैच बड़ा अच्छा सा आया कि there were no cars and all. तो तो मुझे भी आइडिया नहीं रहा. I was like 124 kilometers. Speed limit is 120 kilometers per hour. And I was driving on 124 kilometers per hour. And suddenly मैंने दूर से there was a speed gun or speed camera. बट मैं पास से गुजर गया. Nobody stops me. उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा जब मैं उतरूंगा टोल प्लाजा से दे विल स्टॉप मी एंड चार्ज मी व्हाटएवर द फाइन इज. तो उन्होंने मुझे वहां भी नहीं पूछा. व्हाट हैपेंस, वो भूल गए. क्या हुआ कि उन्हें ये लगा कि ये सर आसिम जा रहे हैं तो वी शुड स्टॉप हिम. ऑब्वियसली ये तो केस नहीं होगा. बताएगा मुझे. दो चीजें हो सकती हैं जो सेंस बनाती हैं. एक कि उन्होंने इग्नोर कर दिया, या दूसरा कैमरा ने पिक करते हुए किसी और गाड़ी को पिक कर लिया, पीछे वाली गाड़ी को मिस कर लिया. अच्छा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ जी कोई भी नहीं था, मैं अकेला अकेले ही जा रहा था. देर आर सम टाइम्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन द मोटरवे तो ये पैचेस आ जाते हैं वेयर यू आर अलोन. सो दिस इज वन ऑफ द दैट पैच. और मुझे पिक नहीं कर सके. दैट्स नॉट लाइक इट. मैं भी बताता हूँ उसकी क्या रीज़न होती है. हम डिस्कस भी करेंगे इन future lectures, but I just want to make a reference. There is a technology which is called as ANPR, Automatic Number Plate Recognition. जब ये स्पीड गन्स लेके खड़े होते हैं ना, there are two cameras. One camera is representing ANPR and the second camera is basically monitoring your speed. यानी second camera will be monitoring your speed and one is ANPR. अगर if you are violating any specific speed barriers, तो that will be your चलान होगा and then ANPR जो आपका उसको कैप्चर कर लेगा ऑफ योर नंबर प्लेट. अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस, मैं एक्चुअल आपको बात बताता हूँ. ये तो एक दफा मेरे से एक्सीडेंटली हो गया. अच्छा, वापस में मैंने कहा कि यार इसका मतलब ये है कि दे माइट गिव सम ग्रेस स्पीड, यानी कुछ ना कुछ ग्रेस स्पीड होंगे. और वो मैंने पूछा नहीं, बट आई स्टार्ट माय जर्नी ऑन वे बैक माय होम. सो मैं जो है वो एक पैच, उसी पैच में जहाँ मुझे पता था कैमरा नजर आ रहा है, मैंने फिर 125 126 पे चलाया, मुझे फिर नहीं पता. सो ओवर द टाइम विद माय एक्सपीरियंस, यानी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि विद माय एक्सपीरियंस आई हैव लर्न दैट के 130 kilometers, the 10 kilometer speed is a grace speed. Like if you are driving on लाइक यहाँ जहाँ हम बाहर ड्राइव कर रहे होते हैं 60 किलोमीटर्स जहाँ लिखा होता है, सो 60 km का मतलब है कि दे विल चलान यू ऑन 66 किलोमीटर्स. दे विल गिव यू 10% एक्स्ट्रा ग्रेस. सम टाइम वो 10% हो जाता है, मतलब आप पता नहीं लगता, तो वो थोड़ा सा 10% तक ऊपर नीचे का दे विल गिव यू अ चांस, यानी दे विल गिव यू अ ग्रेस स्पीड. सो नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन. नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वी सेड ही डेटा एंड इंफॉर्मेशन comprises of prior experience. जब हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन जो है उसमें इफ वी ऐड आवर एक्सपीरियंस, और जो भी वी हैव
नॉलेज इज समथिंग विच इज नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन. बुक रिटन कोई चीज जो है वो काफी नहीं है. यू लर्न योर वेज, यानी when you are learning something with your own prior experience, that would be called as knowledge. उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास knowledge है. When you're learning something with your prior experience, that would be called as knowledge. इन knowledge को भी जरा अपने पास लिख लें, then we'll do next thing. Or if you have a question regarding these three things, you can ask me right now, and I'll do the next topic probably. Sure, Part but of this topic. like if we you, you just define knowledge as prior experience, so the knowledge we learn from books or something, won't that be that college That called is knowledge? information. That is Okay, that is information. okay. ये मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको. What happens actually when you pass out from university and actually go for the work for getting some experience, that is called as internship. We usually do internships. Why we do internships? To convert our information, whatever we have, into knowledge. जो हमने लर्न किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम हाई स्कूल, फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम वेयरएवर, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द नॉलेज. उसको हमने कन्वर्ट करना है. एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट इट? बाय यूजिंग sheer experience. Whatever we are doing here is altogether different thing because we are not experiencing them. If we experience it, तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट आपको जो है वो लर्निंग मिलती है. और जनरली जो होता यही है कि when you learn from your experiences, you never forget that. मतलब आप उसको भूल नहीं सकते हैं. इसलिए तो कहते हैं learn from experiences. If you're done with it, तो मैं should I scroll the screen? Let me know if you are done with it so we can move forward. Done, sir. Answer. Sure. So now what we have to see. पहले हम एक चीज देखते हैं, then we come back to data. Now we have to see the data life cycle. There is one thing which is called as data life cycle. It means it's a cycle, and it would be something which is recurring again and again. So that means it starts from data like this, moves on to process, and then it moves on to information, then to data. So this is how our data life cycle works. Now we already talk about data. Data mean facts and figures which is not in the complete form, which is not understandable right now. Uh, Independently, they might be understandable, they might make some sense, but in the complete sense or complete, didn't create complete. Whereas what we do, we process it. We do something with it.
we create a few things around that specific data, and that will be converted into the information that would be more understandable to the human being. So when we talk about this life cycle, we have to add few things. Now, अगर तो हम इसकी बात करते हैं तो इसने कंप्यूटर के साथ क्या करना है, मतलब इसका कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है, डेटा प्रोसेस. We don't have anything here. So what we need to do, we have to the data. How we can enter our data into the computer? By using different input devices. So data mean that data will be added through the use of input devices. Now the next thing is process. Process means CPU. If I want to convert it into the computer language, तो फिर ये होगा. And information means which I see on my screen और वो जो मैं उसको print करके देख सकता हूँ. So these are the output devices. So data, process, and then we have an information. Input devices are used to input the data for communication between user, us, and computer. The process is basically the CPU. CPU stands for, anyone? CPU stands for, Amin? CPU is what? Central processing unit. Central processing unit. Very good. अच्छा, जो आसान सवाल होता है उसका सब फौरन जवाब देते हैं, जो मुश्किल होता है उसको पूछ भी लो तो आधे घंटे बाद जवाब आता है. Good. अच्छा जी, so CPU means Central Processing Unit. Central Processing Unit, we all know, I hope we all know, कि वो जो एक बड़ा डब्बा होता है of a computer, there is a motherboard in that dabba, and CPU is a small chip. CPU is basically a small chip. The different registers and all that, एक छोटी सी chip होती है which is on your computer, on motherboard. And this CPU is basically working as the brain of your computer. This CPU is working as the main spearhead of your computer. And then we have output devices. Output devices, there are so many output devices. कभी हम जो है, we want to see our data in the form of hard copies. Sometimes we want to see our data in the soft copies. Soft copy means when you want to see your data on your screen, on projector, पे आप देखना चाहते हैं. And hard copy means when we want to see our data in a printed form. So ये होता है हमारे पास डेटा लाइफ साइकिल. इसको भी जरा अपने पास नोट कर लें जल्दी से, ताकि I'll scroll the screen. All right. It's so one more thing. Right now, Amin is here, Itsam is here, and Amin is here. अच्छा जी, सो आई होप कि आपने लिख लिया होगा. विल मूव फॉरवर्ड. सो हम क्या करते हैं कि हम इसको करते हैं ऐसे, एंड देन वी हैव अनदर थिंग. नाउ बैक टू द डेटा. व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा, तो जाहिर है डेटा इज नॉट ओनली इन सिंगल फॉर्म. जो एक ही फॉर्म नहीं होती है हमारे पास डेटा की. देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा.
Like sometime we write in pure numbers, sometime we write in the text format, sometime we write in any other format. So there are different types of data. So I will write different types of data here. First of all, when we talk about data, the major type of data is numeric, means numbers. When we talk about numbers, so numbers are very important. Uh, we are playing around numbers so many times. So number जो है वो it's very important. So there are different types of numbers. Number one, मैं types की बात कर रहा हूँ. This is not enough for us being a IT student or being computer student कि just write numeric. अगर examiner कुछ पूछता है कि जी एक there is a cell वहाँ इस किस्म की value लिखी है, what would be the data type for this cell? So you have to write it the exact data type, not like numeric. Numeric is so vague, it's so basic, it's so entry level कि वो हमसे ये expect नहीं करता. So when we talk about numeric, it means the numeric can be integer or it could be decimal. And now we know integer means whole numbers. Integer का मतलब है कि any whole number. Whereas decimal means कि any number with fraction. यानी अगर हमारे पास ऐसे होगा, this would be called as decimal. Dot वाला number जो होता है. And then we talk about integers. Integers means whole number. So like 2 is a whole number, 4 is a whole number, 5 is a whole number. These are the whole numbers. So integer and decimal. अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप जो है, मैं बिल्कुल इस एंड पे बना लेता हूँ, बीच में मैं और टाइप्स लिख लूंगा इफ आई नीड इट. सो हमारे पास है टेक्स्ट. टेक्स्ट इज व्हाट? टेक्स्ट मींस एवरीथिंग. टेक्स्ट मींस whatever you are writing from your keyboard is टेक्स्ट. जो भी आप अपने कीबोर्ड से लिख रहे हैं दैट वुड बी कंसिडर्ड अ टेक्स्ट. तो फिर एक सवाल फौरन कम से कम मेरे जहन में जब मैंने पहली दफ़ा सुना दिस क्वेश्चन स्ट्राइक्स मी कि देन व्हाई वी नीड न्यूमेरिक इफ टेक्स्ट कैन राइट एवरीथिंग. इफ टेक्स्ट मींस यू कैन राइट नंबर्स, यू कैन राइट अल्फाबेट्स. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि टेक्स्ट मींस यू कैन राइट अल्फाबेट्स. जनरली लोगों को सिर्फ यही लगता है कि टेक्स्ट मींस अल्फाबेट्स ही होते हैं. In text you can write numerics. In text you can write alphanumerics. In text you can write symbols. ये जो हमारे पास different symbols and question mark or this and that. So we can write all these things. मुझे ये बताएं कि why we need numerics if we can write anything through text? To perform arithmetical operations. Very good. When we talk about the calculation, when we talk about the mathematical operations, तो उस वक्त we need numerics. टेक्स्ट में आप स्पेसिफिक किस्म के फार्मूलाज, फंक्शंस वगैरह यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिक्स वी कैन यूज एनीथिंग. लाइक हार्डकोर जो मैथ के आपके फार्मूलाज हैं वो बेस्ड ऑन न्यूमेरिक्स होते हैं. सो टेक्स्ट मीन्स कि यू कैन राइट थिंग्स जो आपका दिल करता है, बट दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फॉर कैलकुलेशंस बेसिकली. अच्छा, फिर और इसके अलावा क्या टाइप्स हो सकती हैं? इसके अलावा इसी के अंदर एक और टाइप होती है. देयर इज अनदर टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज चार. चार मीन्स करेक्टर, अ सिंगल डिजिट. डिजिट नहीं कहना चाहिए, सिंगल लेटर कहना चाहिए. अ सिंगल लेटर यानी किसी जगह पे इफ यू आर राइटिंग एम, यू आर राइटिंग एफ, यू आर राइटिंग मेल फीमेल जैसे हम लिखते हैं, और यू कैन राइट ए बी सी. लेट के इफ आई हैव टू चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस तो फिर वो करेक्टर हो सकता है. द अदर डेटा टाइप यानी अदर डेटा टाइप्स में जो हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है दैट इज date and time. Date and time, we know date and time means date and time in a specific format. So date and time have their own restrictions. And if you are writing a date, so you are restricted to
30 or 31 or 28 or 29, you're restricted to certain dates. And if we are talking about the time, we are restricted to certain time. So we can't use text or numeric for that purpose. हम इसको नहीं use करते. अगर हम numbers को use कर लेंगे तो जाहिर है number में फिर restriction तो कोई भी नहीं है, तो वो time में तो फिर नहीं आ सकेगा. अगर हम text को use कर लेंगे तो वो भी restriction नहीं देगा. वो अगर अभी हम कहते हैं कि वी हैव 12 मंथ्स कहते हैं वी हैव 12 मंथ्स, सो उसके बाद तो कोई ऐसे भी लिख सकता है, लेट्स से कि किसी ने कहा कि इट्स दिसंबर, सिंस आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, तो देयर शुड बी पैगंबर. So someone can someone can write like that. So that is why it's a proper format. It's a proper data type. Data type. Acha, after data type, we have another data type which is called as currency. Currency is another data type, very impactful data type. हमारे पास जो है currency की एक data type होती है. Now we use currency. Why don't we use only numerics or numbers? Because when we talk about the numbers, they are numbers only. And when we talk about currency, it means it might comes up with some sign like this. Now there is a pound sign, or there is a dollar sign, or there is a rupee sign. So currency means a number with any currency symbol. Or zahira, we want currency to be used in different numeric functions. हमारे पास numeric functions formulas के अंदर can be used. ये इसको use करना चाहते हैं. Then we have another data type which is called as Boolean. Boolean means yes, no. Boolean means true, false. Booleans mean 1 and 0. यानी हमारे पास Boolean. अगर at some place we have to give a proper data type, so what we do, we use Boolean for that purpose. So there are these are different data types. We might encounter few of them in next week probably, and rest you have to encounter with them. आपको वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी. आपको हमें जब काम करना है with the software, especially with the database or with the spreadsheets, तो we might have to use them. So ये हमारे पास different data types हैं. इनको जरा लिख लें जल्दी से. Then we move to the next part. कुछ मैंने एक दो सवाल पूछने regarding these data types. So just note it and then we can do this practice. Let me know when you finish working on this. My dear friends,
हो गया? Yes, sir. Okay. चले, अब मुझे माइक प्लीज. थैंक यू. सो थैंक यू वेरी मच. जब हो जाता है आप प्लीज बता दिया करें, मैं वेट करता रहता हूँ और आप भी वेट करते रहते हैं. खैर, नाउ आई वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस. मैं जिससे पूछूंगा आई विल आस्क यू इंडिविजुअली. मुझे आपने उसने ही मुझे इसका जवाब देना है. मीनवाइल मैं यहाँ चीजें लिख लेता हूँ, सो यू माइट टू थिंक ओवर इट, सो यू कैन थिंक ओवर इट. फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा टाइम हमारा लेंगे टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट अगेन. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सब्जेक्ट, all that we can do that question answer. So first of all, I have a field in, let's say I'm creating a database on any software, and right now I'm stuck with the different field names, and now I have to choose their appropriate data types. These appropriate data types are very important, especially when you are creating a database. होता क्या है कि when you select a data type, every data type have a predefined size. हर डेटा टाइप, यानी इफ यू सिलेक्ट इंटीजर फॉर एनी नंबर, या अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो फॉर एनी फील्ड, तो इट हैज अ प्रॉपर डेटा टाइप एंड डेटा साइज, एंड दैट डेटा साइज इज एलोकेटेड ऑन अ हार्ड डिस्क. यानी जो भी आपकी हार्ड डिस्क होती है, इफ यू हैव गूगल ड्राइव, तो वो गूगल ड्राइव के ऊपर एलोकेट हो जाएगा उतना सही. सो हम लोग ये को बहुत इंटेलिजेंटली यूज करें ताकि फालतू डेटा जो है वो ना वहाँ हम उसको ना रख सकें. सो नाउ लेट्स से I have a fields ID, name, then phone number, then email, then gender, then field status. मैं नीचे एक सैम्पल रिकॉर्ड भी लिख लेता हूँ, ज़ाहिर है फिर ही आपको आइडिया होगा कि what I want to do. ID is like A301, name is like Ali, phone number is 0092 33 something, AB at BD, gender is male, fee is 3,000 rupees, status is G. Rami, ID, what do you suggest? What data type? Sir, it's alphanumeric. It's alphanumeric. So we can write text, right? So we can write text. Okay. And Ramit, again, you for name, what do you think? Done. Text. Okay. Okay. Done. Exam. For phone number, what do you think? What data type should we use? Integer or number. अच्छा जी, एक चीज तो याद रखिएगा, देयर इज नो सच थिंग लाइक नंबर. ये नहीं मुझे आपको कहना नंबर, यानी नंबर तो मैंने अभी बताया कि बीइंग कंप्यूटर स्टूडेंट्स, बीइंग आईटी स्टूडेंट्स, हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि नहीं दिस इज इंटीजर. इसने कहा इंटीजर, आई हैव अ क्वेश्चन और रिजर्वेशन ऑन इट. ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्या है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. Sam, again, what about email? अभी जो आप कह रहे हैं मैं वो लिखता जा रहा हूँ बस.
आई मीन चार जेंडर के लिए व्हाट डू यू थिंक? चार चार, टेक्स्ट टेक्स्ट ठीक। टेक्स्ट, टेक्स्ट और चार मैं एक लिखूंगा। तो चार ठीक है, चार ज़्यादा स्पेसिफाई करता है उसको। गुड। एंड व्हाट अबाउट फील्ड? न्यूमेरिक और इंटीजर। And I mean, what about status? Rather, status. स्टेटस would be boolean. Yes. Boolean. ठीक है जी, अब आप अपने माइक जरा बंद कर दें, हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ गलतियां हैं। मुझे यहाँ दो जगहों पे गलतियां नजर आ रही है। It was a wise decision to go for a character या char for a gender. Why it's a wise decision? When we take text, तो टेक्स्ट में तो जाहिर लिमिटेशन नहीं होती ना, तो सिंगल करेक्टर लेने से आपके दो मोटिव जो है वो इकट्ठे जो है ना वो हो जाते हैं, सर्व हो जाते हैं। वन इज दैट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग टू रिस्ट्रिक्टिंग यूजर टू अ सिंगल करेक्टर, दैट हैज बीन डन। सेकंड कि आपने जब लिखना ही एम एन एफ है तो इट इट टेक्स लेस स्पेस इन योर कंप्यूटर, यानी wherever you are storing your records, especially now it's a modern age, people using cloud storage। हमने भी cloud storage पे मैं हम बहुत सारा डेटा यूज करेंगे। I usually talk about this link in last lecture we have talked about this link कि www.box.com/Asim Ali। It's your place कि जहाँ आप जाके and you can download your things, so uh, it's a cloud storage। So cloud storage है, वहाँ आप अपना स्टोर कर सकते हैं। So cloud storage companies have to pay, so वो चाहती है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए। अच्छा, नंबर जो मुझे नजर आ रही है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फोन नंबर इंटीजर। एनीवन if anyone wants to correct it, not at some, anyone else? Yeah, if you are agree with him, Can you repeat? I didn't get it. आपने तो एग्री करना ही है, ये हेल्प यू इन लॉगिन। सो हमारे पास जो है इंटीजर जो है वो इंटीजर नहीं, फोन नंबर। द रीजन बिहाइंड इट, द मेजर रीजन बिहाइंड इट, एनी एक तो लाइक इट्स नॉट, so it's just because of this dash। एक तो रीजन ये है। Number two, any number which is starting with zero, जिस नंबर में लीडिंग जीरो होगा ना, that would be taken as text। So we will be using text, ये याद रखना आपने। For phone numbers, for zip codes, for postal codes, we always have to use text। हम हमेशा जो है इसके लिए text ही यूज किया करेंगे। Now, if you have any from our today's discussions, any one of you, कोई No, sir. any question? Nothing. Okay, let me stop the recording, and afterwards, if you want to ask any question about course and all that, you can